Hello students, here I am going to make a video to make a program in BlueJ. That is, you can see I have clicked here. You can see from nearby view I am showing you. This is BlueJ. You need to double click on this. BlueJ dialog box will open. Here I have made a program. That is, you can see this is of linear search. This program is of linear search. So here you can see I have made a program of linear search. In this program I have created a package import java.util.scanner, then a class kboard linear search. The name of the class is kboard linear search. Then main method I am using here, public static void main string argument, inside which I have written scanner class, scanner in equals to new scanner system.in, char arr, this is for array, equals to new char 10, means the size of the array is 10. For this you need to know what is an array. Array is used to initialize values which are of static data type and which have some index number. So here we have the index number as 10, means we will be storing from 0 to 9. And you should know that the array index must begin with 0th index. So we need to print a message. हमें एक message print करना है. Enter 10 alphabets. बिकॉज हमने 10 साइज़ दिया, इसलिए हमें कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं 10. हम एक फोर लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, जो 10 तक चलेगा. आई 0 से इनिशियलाइज होकर 10 तक चलेगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 0 से 9 तक चलेगा. ए आर आर आई इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट कैर एट 0 में 0th इंडेक्स से ये एक एक एलिमेंट को चेक करेगा. फिर एंटर एलिमेंट अल्फ़ाबेट टू सर्च. आपको अल्फ़ाबेट डालना है 10 अल्फ़ाबेट, तो आप ABCD कुछ भी डाल सकते हो. और उसमें अब आप मान लीजिए आपने डाला B, कि आपको B सर्च करना है. कैर CH इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट कैर एट 0 मीन्स ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट चेक करेगा. कि पहले वो फर्स्ट एलिमेंट में चेक करेगा कि क्या B उसमें है, अगर है तो वो दिखाएगा सर्च सक्सेसफुल, अगर नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा. आगे बढ़ने को बोलते हैं ट्रैवर्सल. व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन index to another index in search of any element, then it is called traversal. int I equals to 0, शुरू में I का वैल्यू 0 होगा. for I equals to 0, I less than 10, I प्लस प्लस, I का वैल्यू 0 और ये 10 तक जाएगा और I प्लस प्लस. इफ़ ARR I इक्वल CH मीन्स अगर एलिमेंट मिल गया, अगर हमें वो एलिमेंट मिल गया तो वहाँ पे हमारा सर्च स्टॉप हो जाएगा. इफ़ I इक्वल 10, अगर पूरा 10th इंडेक्स तक जाकर भी हमें वो एलिमेंट नहीं मिला तो हम लिख देंगे सर्च अनसक्सेसफुल. सो टू रन दिस प्रोग्राम we will first compile this program. You can see here it is written class compiled, no syntax error. Now we will close it. When we will close it, we will right click it, new keyboard search. We will click here. This kind of dialog box will come. We will click here OK. This will come here. This is the technique how to run a Java program. We will click right click. Because we are not running it properly, that's why this screen way has came. Right click, this kind of thing is coming, so we will run again. We will right click, void main, we need to click on void main. When we will click on void main, this kind of thing will come. We will click OK. Then it is asking enter 10 alphabets. Then you will enter
A, you can see downside it is coming, B, C, D, B, like this you need to enter 10 alphabet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, enter. So you have entered this and you need to search V. Here we have entered, enter alphabet to search. So we have entered V. When we click on enter, so you will get the message search successful, V is present at index 3. So this is a technique how you can run a program in Java.